Hello guys, how are you? I hope you are doing well. So we are from Law Pado. Law Pado is a virtual platform for law students and judiciary aspirants. So today we are going to discuss about one of the most important concepts of constitutional law, that is all about the nature of Indian federalism, or you can also say the nature of Indian constitution. So here you can find our website, that is www.lawpado.in. You can also visit our page. You can find many of the articles in our page. Our mail ID is all about lawpado1@gmail.com. So if you have any of the queries, then you can directly mail us. So without wasting our time, let's start the video. Yeah, so here is the index, like what we are going to discuss in this particular video has been mentioned here. The language of the video will be a mixture of both English and Hindi. So firstly, we are going to discuss about what is federalism, because this is all, you can say it is one type of debate which is going on in Indian context, where there is a confusion, like whether Indian constitution is a federal constitution, it is a purely federal constitution, or it is a quasi federal constitution. So this is the thing we have to understand in this particular video. So before understanding all these things, firstly you have to understand the basic concept, that is what is federalism, then how Indian constitution is federal, argument in support of federalism, arguments against federalism, and then view of the constitutional makers, and lastly we will provide you a conclusions where we will give our opinion why Indian constitution is considered to be quasi-federal. So these are the things we are going to discuss. Yeah. Before starting the video, firstly you have to understand the classification of constitution. You can find mainly the constitutional juries, they just classified the constitution into two parts, and that particular classification is considered to be a traditional classifications. As per the traditional classification, a country's constitutions can be divided into two parts, can be either it is a unitary constitution, on the other hand it can be a federal constitution. What is unitary constitution and what is federal constitution? You have to understand this first. Unitary constitution means the constitution where the power of the government is centralized in one government, that is the central government. इसका मतलब ये होता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो भी पावर होता है, मेन पावर होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंटर के पास में ही वेस्टेड होता है. दिस इज द बेसिक थिंग, राइट. यूनिटरी मतलब जो भी पावर होता है, इट इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, then you can find a separation of power between the center and the states, or separation of power between the governments who are there in a particular nation. So कौन सा गवर्नमेंट हो सकता है एक नेशन में? सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है. तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है जो भी पावर है वो सेंट्रलाइज होके एक गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगा. इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, राइट. तो यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. एंड बोथ द गवर्नमेंट्स आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फीयर. इसका मतलब ये होता है, ऐसे नहीं होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट काम करता है. ऐसे कुछ हद तक होता है इंडियन कंटेक्स्ट में, वो तो अलग बात है, वो डिस्कस इट लेटर. But mainly what happens in federal constitutions, both the governments are independent in their own sphere, right? So ये बीच में लिखा हुआ है कि क्वाशी फेडरल. सो ये क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग क्या मतलब प्रोनाउंस करते हैं, आई डोंट नो, बट व्हाटसोएवर. So what is quasi federal? ये तो हो गया यूनिटरी भाई, ये तो हो गया फेडरल. देन व्हाट इज क्वासी फेडरल? यू हैव टू अंडरस्टैंड. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं क्वासी फेडरल. क्यों बोलते हैं? तो क्वासी फेडरल मतलब इसका जो लेमन्स लैंग्वेज में मीनिंग होता है, इट इज नॉट फुली फेडरल. ये बीच बीच का होता है, इट्स नॉट फुली फेडरल, और यू कैन से इट इज लिटिल फेडरल, यू कैन से. सो ये क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई वी कॉल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वासी फेडरल? We have to discuss it. Before that, we have to go to the next slide. That is, yeah, what is federalism? This is the first thing you have to understand. What is federalism? If you are able to understand what is federalism, then only you can understand what is quasi-federal. So, federal government क्या होता है? The federal government is a system of government that separates the power between the central government and the state government of a country. It delegates certain responsibility to each sector so that the central government has its own task to do and the state government has its own. So मैं इतने सारे पढ़ गया तो easy language में. Then also I just want to clarify.
फेडरल गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है, इट इज वन टाइप ऑफ वन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर होता है। So federal, whenever the word federal comes to your mind, then you have to remember one thing. So federalism or federal means separation of power. Among whom? Power को हम separate करेंगे किसके बीच में? Between the central government and the state government of a country. If there are two government are there, or if there are two government in a country, the distribution of the power between the central government and the state government is considered to be a federal government system, right? It delegates certain responsibility to each sector so that the central government has its own task to do. हम जब टीचर हम जब हमको क्या करते हैं, कुछ टास्क देते हैं करने के लिए, so the task may be same, but we have to do our own task. हमारा दोस्त तो हमारा टास्क करे ना, हमको जो टास्क मिला हम करेंगे. In the same manner, whatever task which has been allotted to the central government, it has to perform, and whatever task which has been allotted to the state government, it has to perform in start. जो टास्क है वो कहाँ पर लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. So जो भी जिसका टास्क है, they have to perform that task without any sort of limitations. They have to perform their own task, right? So it delegates certain responsibility to each sector so that the central government has its own task to do and the state government has its own. In a federation, matter of national importance remain with the center while the matters carrying the local importance and day-to-day administrations is entrusted in the states. So जो भी task अलर्ट होता है, कौन सा, if you are questioning like if you are going to allot the task to the central and state government, on what basis you are allocating the matters who are of national importance? For example, I just want to quote some of the examples. If it is a matter relating to army, Indian army, it is a matter relating to weapon, nuclear weapon, or you can say the security of India. So these are the matter of national importance. This is the reason why this matter or these subjects are allotted to the central government, and the matters which are of local importance. For example, if we are talking about health, we are talking about education, we are talking about agriculture. So these are such matter which has been allotted to the state government. तो बेसिकली क्या होता है, जो भी मैटर जिसको अलर्ट होता है फेडरल गवर्नमेंट में, उसी मैटर पे वो काम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, दे कैन मेक लॉ ऑन दिस मैटर, दे कैन मेक सम ऑफ द पॉलिसी, दे कैन इंप्लीमेंट सम ऑफ द पॉलिसी ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर. सो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं, येलो में लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. जब भी आपको कोई पूछेगा व्हाट इज फेडरलिज्म, देन यू हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट वन टर्म, दैट इज द सेपरेशन ऑफ और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. यू कैन मेक द नोट्स एज वेल. एंड या next slide. How India is a federal. So before discussing this particular thing, I just want to clarify. Whenever as a law student or as a lawyer, many of the times you can find a topic and you have to give opinion on that topic. Either you have to support the topic or you have to, on the other hand, if you are not, supporting the topic whatsoever, but at the end of the day, you have to give some of the arguments, right? Whatsoever your opinion is, it doesn't matter, but you have to give some of the arguments. So here the main topic is all about how India is federal. This is the main question, whether Indian constitution is purely federal in nature. This is the topic. So either you have to say yes. If you are talking about yes, then why it is federal? You have to give some of the arguments, you have to comment on that. If no, then also why. So in this manner, we are going to discuss the Indian federalism and the nature of Indian federalism. Then argument in support of the federalism. If you are supporting Indian federalism, then what can or what should be the arguments? How India is federal. There are 5 to 6 points are there which has been mentioned. We will discuss it one by one very clear. Firstly, it is all about, the first point here is all about the distribution of the power. This is the basic principle, you can say this is the basic nature of a federal constitution or a federal government. What is that? The distribution of the power. मतलब जो भी power है उसका distribution is considered to be the first essential element of a federal government. In Indian context also, you can see the constitution has equally divided the power between the center and the states, as both the government are deriving their power directly from the constitution. So we can say yes, Indian constitution is a federal constitution. आपको ये पता होना चाहिए कि Indian constitution क्यों federal है, क्योंकि आप यहाँ पर एक argument ऐसे दे सकते हैं कि जो division of power है इंडिया में, वो constitution में mentioned है. यहाँ पर एक equal division of power you can see in the constitution. So as the governments are deriving their power directly from the constitution, and there is, you can find a division of power, and you can say yes, Indian constitution is a federal constitution. So secondly, it is all about the supremacy of the constitution. What is supremacy of the constitution? What do you mean by supremacy of the constitution? The federal constitution must be a supreme constitution. The federal constitution must be a supreme constitution. Both the state and the central government
and deriving the power from the constitution itself. If the government wants to be federal, then it must have an supreme constitution. तो ये बोलता है कि फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? Because as I have already mentioned in the above slide, you can say both the government are deriving their power from the constitution, right? If the constitution itself is not supreme, then no one will obey. One government will not obey the another government. This is the reason why the constitution has to be supreme, because they're directly deriving the power from the constitution. मतलब वो जो पावर, जो जिसका पावर है वो irrespective of the fact whether you are a central government, whether you are state government, जो भी पावर है किससे लेते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट आपको, स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको पावर देता है. पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं. सो एट द एंड ऑफ द डे द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम बॉडी, इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, राइट? सो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है सुप्रीम होता है. इन इंडियन कंटेक्स्ट आल्सो यू कैन सी द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. एंड आई कैन आल्सो कोट एन एग्जांपल्स. इफ यू हैव ऑलरेडी read about the rule of law, then you can find three principles of rule of law. And in that you can find in Indian context the मतलब जो भी constitution होता है, the constitution is supreme. This is also one of the argument you can also give. Then coming to the third argument is all about the written constitution. What do you mean by written constitution? Whether it is necessary, a federal constitution must be a written constitution? Yes, the federal constitution should be a written constitution. It is necessarily a written constitution. For Indian context में, as we all know, Indian constitution is a written constitution. It is not only the written constitution, but you can say it is the lengthiest constitution in all over the world. क्योंकि हमारे पास जो आर्टिकल पहले था 395 था, अभी बढ़ करके 400 कुछ 48 आई थिंक हो गया है. तो आज आपको सबको तो पता होना चाहिए कि जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, right? It is also considered to be the lengthiest constitution. So what is the what is the logic behind it? Why there is in a federal government it is very much required that the constitution should be written down? What is the reason? So let's यहाँ पर लिखा हुआ है कि reason written contracts are more clear to avoid ambiguity. So let's take an examples of a contract. You can sign a contract either by it may be a written contract, or on the other hand it can be oral contract. But the thing is that if it is a written contract, then if for example if in future any sort of ambiguity arises, then directly you can show the contract, भाई साहब ये देखिए लिख करके दिए. लेकिन ओरल में क्या होता है, there is a possibility कुछ मतलब ambiguity आ सकता है, क्योंकि ओरल तो ओरल होता है, रिटन में तो होता है ये थोड़ा क्लियर एंड क्लियर होता है. So this is the reason why, as there is you can find a distribution of the power between the center and the state. If the constitution has been written down, then what happens then? If any sort of ambiguities arises, then you can directly refer to the constitution, what has been written in the constitution. जो भी ambiguity आता है आप रेफर कर सकते हैं कि भाई साहब नहीं ये तो भाई सेंटर का पावर है, नहीं भाई साहब ये तो भाई स्टेट का पावर है. तो दिस इज द रीजन व्हाई द फेडरल constitution should be a written constitution, and in Indian context you can see we have a written constitution, right? Coming to the point number 4 or argument number 4, rigidity of the constitution. What do you mean by rigidity? You have to understand. No one can change the constitution easily. This is in layman's language, you can say this is called rigidity. No one can change the constitution easily, right? What do you think about Indian constitution? Whether Indian constitution is a rigid constitution or not? You have to think about it. What is it? Yes. If yes, why? If no, why? In Indian context, you can say Indian constitution is not fully rigid. It is a mixture of rigid and flexibility, because we are following a middle path. Because there are some of the provisions which you can find in the constitution which are more rigid, which is really rigid, and some of the provisions are flexible as well. Rigid होने जो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, व्हाट इज द रीजन इट शुड बी अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन? क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है. इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिजिड, देन व्हाट हैपेंस? इफ द सेंटर इज मोर पावरफुल, देन इट कैन अट्रैक्ट और it can directly take some of the powers from the state without any restrictions, right? So this is the reason why the constitution should be a rigid constitution in a federal system, in a federal government. तो इंडियन कंटेक्स्ट में क्या होता है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड इन दोज एरिया वेयर इट क्लियर्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. भाई मेन खेल तो यहाँ है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाई देयर इज ग्रेट सैल्यूट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर. भाई ऐसे बनाए हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन. भाई साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बनाए थे वो बोले कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा रिजिड है, ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है, बट it is rigid in those areas where it bears the provision regarding the distribution of power between the center and the state. जहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी प्रोविजन है, व्हाट आर द प्रोविजंस आर रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, उसी प्रोविजंस जितने भी सारे हैं वो रिजिड होता है. विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट यू कैन नॉट
amend the constitution in those area particular. So a federal constitution has to be rigid in important areas, as Indian constitution is rigid in important areas. So we can say that the Indian constitution is federal in nature, right? Coming to the next argument is the independence of judiciary. So here you can find one of the word like CCTV. CCTV क्यों लिखा हुआ है? Whether the judiciary works like a CCTV camera, and why it is very much required that there should be an independent judiciary in a federal system. What is the reason? आपको मैं यहाँ for examples एक example देता हूँ, then it will be more clear. Example ये है, for example, if you are a child and you also have a younger brother, so what happens? Whatsoever food is going to be distributed between you, many of the times what you do after taking your food to directly attach on your brother, आप उसका जो खाना है वो खाना चाहते हो क्योंकि आप बड़े हो, थोड़ा पावरफुल हो, राइट? तो उसी टाइम क्या होता है, योर पेरेंट्स दे जस्ट एक्ट लाइक द सीसीटीवी कैमरा, राइट? इधर योर फादर, इधर योर मदर, खुश होगा, बोलते हैं बच्चा तो बड़ा है, ऐसे क्या कर रहा है, छोटे से खाना ऐसे लेकर के खा रहा है, उसको तो खाने दे. So yeah, the judiciary is our parents. Judiciary works like the CCTV camera. So federal setup must have a judicial setup. It is the duty of the court to watch whether both the government are working in their domain without imposing others jurisdiction. क्योंकि वो नहीं रहेगा तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो बड़ा भाई हो, स्टेट गवर्नमेंट छोटा भाई से कब कहाँ छीन ले उसका तो पता नहीं. So this is the reason why the federal government must have an independent judiciary. It is independent of both the center and the state. If some of the dispute arises between the center and the states, then the court must solve it as per the constitutional provisions. So center and state government में बीच में कोई भी झगड़ा होता है, if any sort of dispute arises, then what is the duty of the court to solve the dispute? ऐसे नहीं कि अपने मन मतलब अपने हिसाब से कर लेगा, but as per the provisions of the constitution, right? So this is the reason why. And in Indian context also you can say we have independent judiciary, because judiciary को कोई तो हाथ नहीं लगा सकता है, वो तो independent है, वो independence होना भी जरूरी है, because we have. But there are certain areas, like there are 5 areas, article 54, 55, 57. This is area number 1. Area number 2 is chapter 4 of part 5, chapter 5 of part 6, and chapter 1 of part 3, and representation of the states in the parliament. So these are the areas where center requires the consent of the states. If 50% of the state have given their consent, then only the amendment can be happened, or the amendment will be considered to be a valid amendment. So इसका क्या मतलब ये क्या होता है? Why we can say the Indian Constitution is a federal constitution. Federal constitution में क्या होता है, जो भी amendment होता है उसमें क्या होता है, both the center and the state has to be participate, right? In Indian context also there are some areas are there where without the consent of the states, the center cannot amend the constitution, right? So this is the reason why we called Indian Constitution is a federal constitution. ये जो area है मैं shortly mention किया हूँ, otherwise the video will too long. You can go and check. I have already mentioned here. You can go and check what are the areas where the center have to take the consent of the state at any cost. Otherwise, it will be considered invalid. Yeah, guys, we have already discussed about like what are the arguments in the support of Indian federalism. So now we are going to discuss about some of the arguments where we will try to prove why India is not federal. So in this context you can find 10 to 12 points. The first point is all about deviant features, single constitutions. So what do you mean by single constitutions? So this is a very basic concept. Whenever you are talking about a federal country, it's you can find different type of constitutions or so many more than one constitution in a federal country. For example, if you take the example of America into consideration, then you can find in American context there is one constitutions of their of United States, and the states also have their own constitutions, right? So here it has been written in America, we can see the states have their own constitutions. However, in India we have only one constitution. So basically ये यहाँ ये बताना चाहता है, अब इंडिया में जब एक constitution है, एक single constitution है, somehow it is not supporting the concept of federalism, right? Secondly, dual citizenship. Similarly, if you take the examples of America, then you can find in America the citizens have dual citizenship, right? लेकिन इंडिया में क्या होता है, you cannot say we have dual citizenship, we have only single citizenship, that is we are Indians. And ऐसे नहीं होता कि if you belongs to Bihar, then बिहार का एक citizenship मिले आपको मिलेगा, if you belongs to Orissa or any other state like Maharashtra, Gujarat, whatsoever the state is. तो state के basis में we don't have citizenship, we have only one and unique citizenship to all the citizens which has been given by our country, that is we are Indians, right? Coming to the next point, that is emergency provisions. So what happens during the time of emergency, the distribution of the power
between the center and the states get suspended. So I think you know about it, like Article 352, 356 and 360. These are the most important articles in the context of financial emergency, state emergency and national emergency, right? सो इसमें क्या होता है कि इमरजेंसी के टाइम क्या होता है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो थोड़ा मोर पावरफुल हो जाता है, राइट? ड्यूरिंग इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट लूजेस इट ऑटोनॉमी. At the time of emergency, the Indian system shows unitary feature which hampers federalism. तो फेडरलिज्म का ये एक स्पिरिट होता है, उसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. बट इंडियन कंटेक्स्ट में क्या होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी द पावर शिफ्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो this is not following the spirit of federalism, so we can say it is one of the characteristics of the unitary systems, right? Article 3 ये भी एक argument है. क्या argument है? Article 3 basically talks about the center or the parliament can change the name of the state with or without the consent of the state. Here there is a mistake. By mistake I just wrote it like he, but actually this is the consent of the state, right? Sorry. So इसमें क्या होता है कि आर्टिकल 3 ये बोलता है कि सेंटर अपने हिसाब से दे कैन चेंज देयर नेम एंड द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट. फॉर एग्जांपल्स यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड क्या बोलते हैं तेलंगाना. तो वहाँ पर जो चेंजेस हुआ वो किसके हिसाब से हुआ, सेंटर के हिसाब से. विदाउट सेंटर विदाउट पार्लियामेंट यू कैन नॉट चेंज दैट. फॉर एग्जांपल पहले ओडिशा का नाम ओडिशा था, ORISSA. नाउ इट हैज बीन चेंज टू ओडिशा, ODISHA. जो नाम चेंज हुआ किसके हिसाब से हुआ, सेंटर और पार्लियामेंट के हिसाब से हुआ. सो दिस इज द रीजन व्हाई सम पावर हैज बीन गिवन टू द सेंटर इन द कंटेक्स्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चेंजिंग द नेम, चेंजिंग द बाउंड्रीज. सो हियर स्टेट का कंसेंट वो मैटर नहीं करता है, ऑल्दो स्टेट क्लेम्स. दिस इज द रीजन व्हाई द सेंटर come forward to change the territory or the name of the state. But इसमें क्या होता है, मेनली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है. इट इज अप टू देम इफ दे वांट टू चेंज और इफ दे डोंट वांट टू चेंज, राइट? सो दिस इज सच अ थिंग व्हिच डोंट फॉलो द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, राइट? Coming to the fifth part, that is all about the Schedule 7 of the Indian Constitution. So what is Schedule 7? So as we all know, we have three lists. One is union list, one is state list, and another is concurrent list. In union list, the union can make laws. In the state list, the state can make laws. And in concurrent list, that concurrent list, both the state and the union can make laws. Both the state and union can make laws. So जो Schedule 7 में 3 list है, उसमें आप देखेंगे तो you can find the center has the list which is known as the union list. In union list, you can find 100 subjects. Please try to focus on this particular thing. You can find 100 subjects. जो union list है उसमें आप 100 subject पाएंगे. State list में 61 subject पाएंगे और concurrent list it has not been mentioned here. So जो 100 subject है यहाँ पर 61 subject है. मतलब इस subject में on these 100 subjects, the center can make laws. On these 61 subjects, the states can make laws. यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो किसके पास सब्जेक्ट ज्यादा है, यूनियन के पास सब्जेक्ट ज्यादा है. So Schedule 7 of our Constitution talks about the distribution of power of the center and state. From the above mentioned fact, it is quite clear that the central government has a more number of subject matter comparing to the state governments on which it can make laws. सेंटर के पास ज्यादा सब्जेक्ट है तो पावर ज्यादा किसके पास हुआ, सेंट्रल के पास हुआ. So it is not following the spirit of federalism, right? Even in the concurrent list also, the parliament can claim superiority or if it is in the national interest. For example, as I have already mentioned, concurrent list is that list on which both the central government or the state government can make laws. But if the subject is in national interest, जो भी subject है, if it is in national interest, then definitely the power will shift to the center. Then definitely the center can make laws on it. So ये जो चीज है, ये जो concept है, ये basically ये बोलता है कि ultimately some of the power has been given, some of the more power has been given to the center comparing to state. 6 वाला जो हमारा point है, it is all about unified judiciary. What do you mean by unified judiciary? We have district court in all the districts, we have high courts in all the states, and we have only one supreme court. Unified मतलब ये होता है यहाँ पर जो supreme court है वो supreme होता है. Supreme court is the highest court of our nation. So जो भी last decision होगा सुप्रीम कोर्ट का वो भी फाइनल कंसिडर किया जाएगा. कमिंग टू द पार्ट ऑफ ए फेडरल कंट्री, उसमें क्या होता है, हाई कोर्ट शुड ऑल्सो हैव द सेम पावर. बट इंडियन कंटेक्स्ट में हमारा क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट पावर उसके पास ही होता है. तो सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट among all the courts. High courts are higher in the state's judicial administration, but they are subordinate to the supreme court. तो ये जो कंसेप्ट है कि एक ही हाई कोर्ट एक ही सुप्रीम कोर्ट रहेगा देश में, तो somehow it is not promoting the spirit of federalism, right?
Then appointment of the governor. The governor of a state is appointed by the president under Article 155 and 160. So basically इसमें क्या होता है? The president is the executive head, right, of a state. तो एग्जीक्यूटिव हेड जब कोई स्टेट का हेड को इलेक्टेड करता है तो पावर ज्यादा किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है और गवर्नर के पास है. डेफिनेटली कि प्रेसिडेंट के पास तो पावर है तो ही वो गवर्नर को अपॉइंट करता है. सो दिस इज समथिंग व्हिच शोज दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फुली फेडरल, राइट. व्हाई इंडिया इज नॉट फेडरल, उसका जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो है आर्टिकल 250. What Article 250 talks about? During the time of national emergency, the Parliament assumes concurrent legislative jurisdiction over the subject mentioned in the state list. ये एक चीज हो गया जहां पर कि क्या कर सकता है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है. ओके, आर्टिकल 252. आर्टिकल 252 क्या बोलता है? अंडर द आर्टिकल 252, इफ टू और मोर स्टेट legislature pass a resolution authorizing the parliament to legislate over the parliament assumes legislative jurisdiction over the state subjects and the law remains in place till the time it is repealed by the parliament itself. इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आई कैन से 4-5 स्टेट है वो मिलकर के एक लॉ बनाना चाहते हैं तो पार्लियामेंट के पास गए, बड़ा भाई वो है पार्लियामेंट. स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट वाले गए सेंटर के पास, बोले कि भाई साहब हमको एक लॉ बनाना है, आप बना दीजिए. बना दिया लॉ. किसने बना दिया? सेंटर ने. बट इफ आफ्टर सम टाइम्स इफ द स्टेट वांट्स टू रिपील दैट पर्टिकुलर लॉ, लेकिन वो जब बात आ जाएगा ना तो ये अप टू सेंटर है. अप टू ये तो सेंटर के मतलब सेंटर के हिसाब से चलेगा. मतलब सेंटर जब चाहेगा वो रिपील कर सकता है. बनाने का टाइम तो साथ में आए थे सब, लेकिन कोई स्टेट चाहता है कि जो भी लॉ बनाया था हम उसमें अभी उसका पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, तो वो डिपेंड करता है. इट इज अप टू द सेंटर. इफ द सेंटर वांट्स देन इट कैन रिपील, इफ इट डोंट वांट इट कैन नॉट. इट इज अप टू द सेंटर, राइट. Coming to the Article 248, it is residuary power. Residuary power होता क्या है? As per the Article 248, the Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the state or concurrent list. उसमें क्या होता है? For example, let's consider, as we have already discussed, there are 3 lists: union list, state list, concurrent list. ऐसा कोई subject matter आ गया which is not even mentioned in state list और concurrent list, तो उसी मैटर में भी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं. दिस इज कॉल्ड रेसिडुअरी पावर, राइट. Then law made by center shall prevail over the state law. If there is an inconsistency between the laws made by the parliament and the law made by the legislature of the state, the law made by the parliament, whether passed before or after the law made by the legislation of such state, shall prevail over the state law as per article 245. 245 ये बोलता है कि कोई एक कंफ्लिक्ट हो गया सेंटर और स्टेट के बीच में. सेंटर बोलता है कि भाई साहब मेरा हक है, मैं लॉ बनाऊंगा. स्टेट बोलता है कि नहीं भाई साहब मेरा हक है, मैं लॉ बनाऊंगा. उससे रिलेटेड कोई कंफ्लिक्ट आता है तो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विल बी प्रिवेल. समझ रहे हो? जो भी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया होगा इट विल प्रिवेल वेदर पास बिफोर और आफ्टर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर. फॉर एग्जांपल, कोई कंफ्लिक्ट होता है कोई स्टेट और सेंटर के बीच में. सेंटर बोलता है कि भाई मैं बनाऊंगा लॉ, और स्टेट बोलता है कि मैं बनाऊंगा. और स्टेट ये भी बोलता है भाई साहब मैं तो पहले बनाया था, अब तो बाद में बनाए. देन व्हाट विल हैपन इन दैट केस? In that case also, no matter what, whether the center has made the law first, whether the state has made the law first, it doesn't matter. But however, the law which has been mentioned, which has been made by the center, will prevail over the state. Then your number is all about 12. 12 number point is all about Parliament can legislate on the matters listed in the state list. Under Article 249, Parliament is empowered to make laws with respect to every matter enumerated in the state list if the Rajya Sabha passes a resolution by 2/3 majority that is necessary for the national interest. Right? ये भी एक सेंटर के पास. लास्ट वाला पॉइंट जो है वो है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. CAG has to carry the audit for both the center and the state. However, he is appointed by the president and can be removed by him with the approval of the parliament. So CAG जो होता है वो पार्लियामेंट मतलब वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट होता है, लेकिन वो जो कंडक्ट कराता है ऑडिट वो बोथ दैट वाज फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट. तो लेकिन उसका जो अपॉइंटमेंट करता है वो प्रेसिडेंट करता है, वो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूनियन. So ultimately we can say somehow it is not following the spirit of federalism in this context. So ये जो 14 points था इसमें हम डिस्कस किए कि कौन सा provisions, what are the provisions which are there in the Indian Constitution which basically denotes that Indian Constitution is not federal in nature. And previously the points which we have discussed basically talks about what are the points or what are the provisions which has been mentioned in the Indian Constitutions who talks like the Indian Constitution is a federal constitution. So हम दो टाइप का हमारा व्यू आ गया. अभी हम देखेंगे some of the scholars and jurists on Indian federalism को क्या बोले थे. फर्स्ट केसी बोले थे कि the Indian Constitution is almost quasi federal, a unitary state with subsidiary federal features. ये बोले थे कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक क्वाशी फेडरल मतलब लिटिल फेडरल है.
राइट. इट इज नॉट फुली फेडरल, इट इज अ क्वासी फेडरल, ए यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडियरी फेडरल फीचर. मतलब ये एक यूनिटरी स्टेट है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जो पावर है वो यूनियन के पास होता है, एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हैव सम ऑफ द फेडरल फीचर्स. उसी के साथ भी सम ऑफ द फेडरल फीचर्स भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोलते हैं कि है. आइवरी जेनिंग्स क्या बोले थे, इंडियन फेडरेशन इज अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी. वो बोले थे हाँ इंडियन फेडरेशन एक फेडरेशन है, समहाउ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब ज्यादा जो पावर है वो सेंटर के पास ही है. ऑस्टिन्स इंडियन सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म इज ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. इट इज नीदर प्योरली फेडरल नॉट प्योरली यूनिटरी बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ. ऑस्टिन बोला कि भाई देखो मैं बीच बीच का बात बोलूंगा, वो है कि ये फेडरलिज्म जो है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है. इसमें क्या होता है, इट इज नॉट प्योरली फेडरल, ऐसे नहीं कि अमेरिका की टाइप का फेडरलिज्म है, और नॉट प्योरली यूनिटरी, ऐसे भी नहीं है कि पूरा यूनिटरी है, क्योंकि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सम ऑफ द प्रोविजंस आर देयर, वी कैन सी सम ऑफ द प्रोविजंस where it talks about federalism or it have the spirit of the federalism. So it is a combination of the both. Dai se bole the extent of federalism in India is largely watered down by the needs and progress and development of a country which has to nationally integrated, politically and economically coordinated and socially, intellectually and spiritually affected. So this wala definition is a little tricky, but he is also talking about the same thing. जिसमें ये बोलते हैं कि द एक्सटेंट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया इज लार्जली वाटर्ड डाउन बाय द नीड और प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री. जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्या होता है कि हमारा एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द नीड हम ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, राइट. जिसमें क्या होता है हमारा जो कंट्री है वो नेशनली इंटीग्रेटेड हो सकता है, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली वो ग्रोथ कर सकता है. ये चीज व्यू ऑफ इंडियन स्कॉलर क्या बोले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और आज यू नो द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Our constitution is federal in as much as it establishes dual policy. Our constitutional makers have avoided the tight mold of federalisms in which the American constitution was forced. American constitution में ये होता है, it is purely federal in nature, right? But in Indian context, we have a federal system, we have a federal government, but it is not like the American system we are following in India. The Indian constitution is both unitary as well as federal according to the requirement of the times and circumstances. So डाइसी भी जो बोले थे अम्बेडकर का व्यू थोड़ा लगभग उनके साथ मैचिंग कर रहा है. मतलब ये बोले थे कि as per the time, as per the requirement of the time. For example, if national emergency will come, then definitely some of the power will shifted to the central government as per the requirement of the time. मतलब जो भी टाइम आएगा, जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पावर यहाँ पर क्या शिफ्ट होता है, समझ रहे हो. तो इसीलिए ये एक यूनिक टाइप का फेडरलिज्म है. बी एन शुक्ला बोले थे द correct view is that the emergency provisions which comes into operation only on the happening of specific contingencies do not modify or destroy the federal system. It is rather a merit of the constitution that it visualizes the contingencies when the strict application of federal principles might destroy the basic assumption on which our constitution is built. ये बोलते हैं कि हाँ इमरजेंसी प्रोविजंस में क्या होता है कि ऑपरेशन में क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर चला जाता है. इसका मतलब ये नहीं कि हमारा फेडरल सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया है, राइट. तो एज पर द मतलब रिक्वायरमेंट ये शिफ्ट होता है जो कि हमारे लिए ही अच्छा है, राइट. तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब स्कॉलर्स का व्यू था. नेक्स्टली वी विल फॉलो लाइक दिस इज द कंक्लूजन पार्ट व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन में पहुंचे. ऑन द बेसिस ऑफ द above mentioned points, it is very clear that India is not completely federal and typical federal like America. अमेरिका में क्या होता है आज we have already know the pure system of federalism is followed in America. Indian context में as we have already discussed the topic clearly, तो आज आपको पता होगा कि we are not following a pure federal system. It is a quasi federal system. Or we can also say India's federation is unique in itself. We can also describe it as federation sui generis. Sui generis का मतलब ये होता है कि federation of its own kind, right? तो इंडिया का जो फेडरेशन है वो किसी के साथ हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज यूनिक इन इटसेल्फ. Some of the people also says that our constitution is a copy pasted work. I don't agree with those persons. If someone is saying that our constitution is a copy pasted work, then you can give the example of our federalisms. ये copy pasted work होगा तो obviously ये तो हमारा जो concept का federalism है it should be same as the federalism of other countries. But that is not the thing. तो हमारा एक जो फेडरलिज्म हम फॉलो करते हैं यूनिक है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर प्योरली फेडरल नॉर प्योर यूनिटरी बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. It is a unique of composites. It is a union of composite state of a noble type. Neither the parliament nor the state legislation is sovereign because each being limited by the constitutional provisions affecting the distribution of power. आप बोलेंगे कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, हाँ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. आप बोलेंगे कौन सा किसके पास पावर ज़्यादा है किसके पास कम है, ऐसे नहीं है. अपना अपना पावर
constitution से वो derive करते हैं as per the requirement of time power shift होता है. So this is the reason why Indian constitution is considered to be a quasi federal constitution, or it is such a concept which is unique in itself, right? Thank you. So this was the concept which we have covered in this particular video, where we talked about what is federalism, the nature of Indian constitutions, the argument in support of federalism, the argument against federalism, the views of the constitutional scholars and jurists, and in the conclusion part, we just gave our opinion. So yeah, thank you so much for watching this video. Our web page you can find at www.lawpado.in. Mail ID is lawpado1@gmail.com. So subscribe our YouTube channel, which is named as Law Pado. Thank you guys. Thank you so much.